decompose कर जाएगा and we'll say electrolysis has happened. So by the way, ये आपका brain है. Decomposition technically in your syllabus is of two types. One with the passage of Lex T is called as electrolysis, यानी कि आपके पास compound है और आपने electricity पास की और वो अपने elements में convert हो गया. That is called as electrolysis. Otherwise, the other one is actually a thermal decomposition, जो heating पे होती है. आपने compound को heat किया और वो अपने respective smaller compound और elements में convert हो गया. So technically, decomposition in our syllabus, whether O level or IGCSE, is of two types. It's a thermal decomposition and electrolysis. This time we were learning electrolysis. Whenever a compound electrolyzes, it converts into its elements. So please don't forget it. Okay. Guys, I'm just actually repeating it a bit. Electricity. And lysis means breakdown. So it is a breakdown due to the passage of electricity, right? So what is electrolysis? It is breakdown of a compound, so by the passage of electricity. A compound, mind it, and that can be ionic compound, whether it's aqueous or molten. Because aqueous or molten state में it's a conductor of electricity, or it can be a covalent compound, और इसकी एग्जांपल सिर्फ एसिड है जो कि aqueous होते हैं. So covalent compounds के अंदर खाली acids हैं जो कि aqueous state में free ions रखते हैं. Otherwise we have ionic compounds in aqueous state and molten states have free ions. क्योंकि this compound should have free ions. It should be able to conduct electricity, right? इसी compound को जिसने decompose करना है on the passage of electricity, इसी compound को in chemistry we call as electrolyte. ये electrolyte जो है ये decompose कर जाएगा and we'll say electrolysis has happened. So by the way, ये आपका brain है. Decomposition technically in your syllabus is of two types. One with the passage of Lex T is called as electrolysis, यानी कि आपके पास compound है और आपने electricity पास की और वो अपने elements में convert हो गया. That is called as electrolysis. Otherwise, the other one is actually a thermal decomposition, जो heating पे होती है. आपने compound को heat किया और वो अपने respective smaller compound और elements में convert हो गया. So technically, decomposition in our syllabus, whether O level or IGCSE, is of two types. It's a thermal decomposition and electrolysis. This time we were learning electrolysis. Whenever a compound electrolyzes, it converts into its elements. So please don't forget it. Okay. Let's move on. Guys, कुछ पहले कुछ बातें कर लेते हैं that how a substance conducts electricity. जी बच्चा. previous slide थोड़ा सा रिवाइंड कर दिया was lighting. Okay. Thank you, sir. No problem. Let's move on. Guys, कुछ पहले कुछ बातें कर लेते हैं जी बच्चा.
सर ये सेकंड मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन नॉर्मली कहाँ यूज होता है? देखो बेसिकली एक तो आप केमिकल बॉन्डिंग है ना, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। एक तो केमिकल बॉन्डिंग है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर करके कंपाउंड बना लेते हैं। अच्छा, जब आपके एलिमेंट्स कंपाउंड बना रहे हैं तो आपने कहा जी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, वापस कंपाउंड से एलिमेंट्स बनाने हो तो फिर आप यहां तो उसको हीट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, राइट, जिसको हम नॉर्मली थर्मल डीकंपोजिशन भी कहते हैं। बाय द वे एल्केन की क्रैकिंग भी डीकंपोजिशन होती है, लेकिन हम वो वाला क्रैकिंग पायरोलिसिस नहीं पढ़ रहे। हम नॉर्मल हीट पे डीकंपोजिशन करना किसी कंपाउंड का, लाइक मेटल कार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट्स जो हम पढ़ते हैं मेटल चैप्टर के अंदर। तो एक तो आप हीट करके डीकंपोज कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक कंपाउंड को डीकंपोज कर सकते हैं। सो आप डीकंपोज करने के दो तरीके हैं, या तो आप हीट करके डीकंपोज कर, और हम उसको थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं, या आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको डीकंपोज करें, उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। we'll pass electricity and we'll decompose a substance. Is it clear? Yes, thank you, sir. No. Compound electrolyzes, it converts into its elements. So please don't forget it. Okay. Let's move on. Guys, कुछ पहले कुछ बातें कर लेते हैं that how a substance conducts electricity. देखिए, if any substance has to conduct electricity, it must have free charge carriers, right? तो free charge carriers का होना बहुत जरूरी है for any substance to conduct electricity. Free charge carriers are of two types. There can be free electrons and free ions. Like for example, अब जो metal है उसके अंदर free electrons होते हैं, right? The metal has free electrons. That's why metals are conductors of electricity. You apply potential difference across the metal, it starts conducting electricity. Then free ions के लिए solutions responsible होती हैं. You can say aqueous solution of ionic compound, molten liquid of ionic compound, and aqueous solution of acids. इन सब के लिए free ions are responsible. Okay? So please don't forget it. देख लेते हैं. Let's say for example, if it's NaCl liquid, molten state of NaCl, इसमें कौन कौन से आयन्स होंगे? तो इसमें Na प्लस आयन होगा फ्री, इसमें क्लोराइड आयन होगा फ्री. If I say I have aluminium oxide in the molten state, तो कौन से आयन्स होंगे इसके अंदर? तो इसके अंदर एल्यूमिनियम आयन्स होंगे, इसके अंदर ऑक्साइड आयन्स होंगे. इररिस्पेक्टिव के वो कितने हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेचर. तो एल्यूमिनियम आयन, ऑक्साइड आयन है. वैसे बाय द वे 2 एल्यूमिनियम आयन है और 3 ऑक्साइड आयन्स हैं एज पर बैलेंसिंग. लेट्स से पोटेशियम ऑक्साइड लिक्विड, इट मींस कि इसके अंदर पोटेशियम आयन्स हैं और इसके अंदर ऑक्साइड आयन्स हैं. पानी नहीं है कि मोल्टन स्टेट में है, तो इसका स्टेट सिंबल इज लिक्विड. लेट्स से मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, तो इट हैज मैग्नीशियम आयन liquid and oxide ion liquid. But guys, when I say NaCl aqueous, तो इसके अंदर सोडियम आयन्स हैं aqueous, क्लोराइड आयन्स हैं aqueous, लेकिन चूंकि aqueous है तो वाटर से H पॉजिटिव आयन भी होंगे और OH नेगेटिव आयन्स भी होंगे. If I say copper sulfate aqueous, तो इसमें कॉपर आयन्स भी होंगे, सल्फेट आयन्स होंगे फ्रॉम द सॉल्ट, और वाटर से होंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. Let's say when I say dilute sulfuric acid,
aqueous, तो इसमें H positive ions and sulfate ions are from sulfuric acid, और water से वही H positive ions and hydroxide ions. Is that so? तो जब एक चीज मोल्टन आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें सिर्फ खाली कैटन एनायन होगा, लेकिन अगर वो एक्वस आयोनिक कंपाउंड या एक्वस एसिड है तो उसमें एक तो अपने आयंस हैं उस सब्सटेंस के, और साथ में एडिशनली वाटर आल्सो गिव्स H positive and OH negative ions in the solution. चलिए यहाँ तक लिखिए अब। देखिए जो सॉल्यूशंस लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट अगर तो आयोनिक कंपाउंड के नीचे आपको लिक्विड लिखा हुआ है, अगर आयोनिक कंपाउंड के नीचे लिक्विड स्टेट सिंबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इट विल बी अ कंडक्टर, व्हाई? बिकॉज़ लिक्विड मींस मोल्टन। लेकिन अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड के लिक्विड लिखा हुआ है फिर वो उसकी फिजिकल स्टेट लिखी हुई है, और कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़ दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस, राइट किंजा? सर ये बचा। सर ये आप आगे कराएंगे ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो ये इलेक्ट्रोलिसिस है डिटेल में? हाँ, यस यस ऑफ कोर्स। सो इतना सवाल आता है, बुक में मिलता ही नहीं है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोई रिएक्शन। नहीं, I'll explain detail of this. अब जैसे मैंने आपको वो कराई है आयनाइजेशन। सर एल्युमिनियम ऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है या फिर नो बेटा, आयोनिक? आयोनिक। आयोनिक इट्स अ मेटल एंड नॉन मेटल, तो आयोनिक कंपाउंड होता है। Yes, Zainab, a bit of it only, क्योंकि rest is not in the part of syllabus now. Okay, NaCl aqueous में एक Na प्लस है, एक Cl नेगेटिव है, और aqueous क्योंकि पानी है तो पानी में H प्लस होता है और OH नेगेटिव होता है। Aqueous जहां पे आ जाएगा वहां पे आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिखेंगे। I'm scrolling a bit up, why? Because the child wants to see the story which is written above. Okay. So metals में free electrons होते हैं। Aqueous solution of ionic compound, molten liquid of ionic compound, aqueous solution of acid, इन सब में free ions होते हैं। All right, moving on now. Yes, if ionic compound is molten, remember it has free ions. But if there is a covalent compound in liquid state, क्योंकि याद है covalent compounds की molten states नहीं होती। अगर उसमें जो liquid लिखा है तो it means it is its physical state at RTP, right? अगर covalent compound की जो liquid लिखा हुआ है तो वो उसकी molten state है, क्योंकि उसकी physical state solid होती है at RTP. So molten ionic हीट करते हैं। yes. So molten ionic compounds have free electron. जब आप ionic compound को heat करेंगे वो melt करेगा तो molten state में आ जाएगा तो उसके पास free ions होंगे। लेकिन जो covalent compound के liquid लिखा होता है वो उसकी molten state नहीं होती, वो उसकी physical state होती है, उसमें कोई electrons और free ions नहीं होते। I'm moving on now, guys. Ions are from sulfuric acid, और water से वही H positive ions and hydroxide ions. Is that so? तो जब एक चीज मोल्टन आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें सिर्फ खाली कैटन एनायन होगा, लेकिन अगर वो एक्वस आयोनिक कंपाउंड या एक्वस एसिड है तो उसमें एक तो अपने आयंस हैं उस सब्सटेंस के, और साथ में एडिशनली वाटर आल्सो गिव्स H positive and OH negative ions in the solution. These free ions will then be responsible for the conduction of electricity. Is that so? Now, देखिए अगर आपने हीट पे किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करना है तो आप उसको क्रूसिबल में डाल लेते हैं, आप उसे बॉइलिंग ट्यूब में डाल लेते हैं। वीडियो लैग कर रही है? यस सर, कट रही है बीच में।
I'll repeat from here again. देखिए अगर आपने हीट पे किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करना है तो आप उसको क्रूसिबल में डाल लेते हैं, आप उसे बॉइलिंग ट्यूब में डाल लेते हैं, isn't it? How to thermally decompose a how to thermally decompose a compound? यानी कि ये आपका क्रूसिबल है, ठीक है, ये ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक, ये नीचे हीट, ये सब्सटेंस, इट्स अ क्रूसिबल, ट्राइपॉड स्टैंड, नहीं तो फिर it's a boiling tube, compound, and you heat it. दो तरीके हैं एक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के. Then how to electrically decompose a compound? How to electrically decompose a compound? This electrical decomposition is actually called as electrolysis. ये जो electrical decomposition का word मैं use कर रहा हूँ, right? This is actually called as electrolysis. Now this electrolysis is done in a sophisticated cell which is called as electrolytic cell. In which we have an external power source, a DC source, a bigger line is positive, small line is negative, it's a battery. It's a DC source, a direct current source. ये copper wires और इनके साथ हमने electrodes attach किए, dipped in a solution which is called as electrolyte. अब बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये देखिए ये वायर्स हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन. अब मसला ये है कि यहां से यहां पे देयर इज अ डिस्कनेक्ट, इट अपीयर्स एज अ डिस्कनेक्ट. तो ये सर्किट कनेक्ट कैसे हो रहा है? तो बेसिकली वायर में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए और यहां पे फ्री आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं for the conduction of electricity. So therefore the circuit is complete. If I place a bulb, I'm telling you it will glow. If I place a bulb, this will glow because circuit is complete. So in wire, free electrons, electrolyte, free ions. And please mind it, electrolyte is always a compound. It's a compound. These are your electrodes. Electrodes, they may be inert or reactive. Inert electrodes are made of either graphite or platinum, whereas reactive electrodes are made of these metals. हम दोनों पढ़ेंगे. लिख ले पहले यहां तक प्लीज. So DC source means direct current. I mean it's a battery. Wires जो कॉपर वायर्स होती हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रिक इंडक्शन. जो कि आपने इलेक्ट्रोड्स बनाए हुए हैं उनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है और जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल. इसलिए द सर्किट इज कंप्लीट एंड इफ आई प्लेस द बल्ब इन द सर्किट, बल्ब विल ग्लो.
यहाँ पे AC सोर्स क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज AC मींस ऑल्टरनेटिंग करंट, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि एनोड कैथोड कौन है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते रहेंगे. I want one electrode to be anode, absolutely anode. The other electrode, a cathode, absolutely a cathode. I don't want them to be interchanging. इसलिए we don't use the alternating current, we use a direct current. कोई भी आयोनिक सॉल्यूशन मॉल्टन या लिक्विड में इलेक्ट्रोड हो सकता है ना? Yes, मतलब आयोनिक कंपाउंड एक्वस ले लें, आयोनिक कंपाउंड मोल्टन ले लें, कोई एसिड एक्वस ले लें, इन सब में फ्री आयंस होंगे. Yes, Zainab. I cannot rewind it further. I can share it further with you. I have to move on from here. वरना वो पीछे बहुत चला जाता है फिर. इनर्ट के लिए क्या मतलब होगा? जो आपके इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट ना करे. तो मैं रिवाइंड कर ही देता हूँ. Because circuit is complete. So in wire, electrons, electrolyte, free ions. And please mind it, electrolyte is always a compound. It's a compound. These are your electrodes. Electrodes, they may be inert or reactive. Inert electrodes are made of either graphite or platinum, whereas reactive electrodes are made of these metals. हम दोनों पढ़ेंगे. Alright, so जो ये आपने डिप किए हुए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ये इलेक्ट्रोड्स हैं. Right, so these electrodes may be inert or reactive. The inert electrodes, graphite or platinum, and we'll also use some reactive electrodes as well. अगर हम इन्हीं जगह अगर मेटल के पीसेस लगा देंगे तो ये reactive electrodes बन जाएंगे. What do I mean by saying inert electrode or reactive electrode? It's what we'll come to know soon when we start learning the process of electrolysis procedures. Okay. Now the electrode attached to the positive terminal of the battery, as you can see, the electrode attached with the positive terminal, so it is positively charged, and the other one is negatively charged. So the positive electrode in chemistry is actually called as the anode, and on anode oxidation happens. इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे. The negative electrode is called as a cathode. यहां पे रिडक्शन happens, क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो गेन भी होता है. Right? Oxidation is happening, the reduction is also happening. That's why the whole process of electrolysis is a redox process. इलेक्ट्रॉन्स सारी बात है नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, जो इसको रिपेल करते हैं. सो वो नेगेटिव से निकलते हैं और पॉजिटिव में जाते हैं. Isn't it? इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल होता है. ये तो एक फैक्ट है. तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखा भी दिया. मोर ओवर गाइस, इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस हैं. इलेक्ट्रोलाइट हैज फ्री आयंस. इलेक्ट्रोलाइट फ्री आयंस मतलब है इसमें कुछ स्पीशीज जो हैं
वो होंगी लाइक अ पॉजिटिव आइन, और कुछ होंगी नेगेटिव आइंस. So the negative ions will attract the anode, oppositely charged ions attract, and positive ions will attract the cathode. Since negative ion attracts the anode, so Y negative is called as the anion. And since the positive ion attracts the cathode, so X positive is called as cation. So आज के बाद conclusion निकल आती है कि हम जो positive ion को कैटाइन कहेंगे और नेगेटिव आयन को एनाइन कहेंगे. और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है. इफ यू जस्ट फोकस वेरी क्लियरली तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग. जी मनान, सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एनोड पर ऑक्सीडेशन कैसे होएगी. ठीक है, देखो एनोड पे आएगा एनाइन, ठीक है, एनोड पॉजिटिव है ना, तो उसके Yes, ऊपर sir. नेगेटिव आयन आके अट्रैक्ट करेगा. अब जो नेगेटिव आयन है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इससे तो वो नेगेटिव है, तो वो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. क्योंकि याद रखें, नेगेटिव आयन हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव आयन हैज टू गेन इलेक्ट्रॉन. उन्होंने अपना चार्ज खत्म करना है, उन्होंने डिस्चार्ज होना है. डिस्चार्ज का मतलब है चार्ज खत्म होना. तो अगर एनाइन ने अपना इलेक्ट्रॉन, अगर एनाइन ने डिस्चार्ज होना है तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है. तो इलेक्ट्रॉन लॉस इज ऑक्सीडेशन. तो इसलिए जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी और जो कैथोड है उस पर रिडक्शन होगी. जब वहां पे कैटाइन आके अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन वो आके एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तो वो रिड्यूस होगा. So remember कि on the anode we have oxidation and on the cathode we have reduction. Do I सर make इन sense? सॉल्यूशन में आयंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. हाँ, एक वक्त आएगा कि सॉल्यूशन में आयंस खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी. ओके. ये देखिए, ये आपका नेगेटिव आयन है. कैन आई से इट हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. ये पॉजिटिव आयन है. कैन आई से इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. होता पता क्या है, ये जो नेगेटिव आयन है जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनोड पे आता है आप अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. जब वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या इसको ऑक्सीडेशन ही कहेंगे. और जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट, इसको रिडक्शन कहेंगे. तो कैन आई से इस आयन का जो चार्ज था वो खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद. इस आयन का चार्ज खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद. तो आयंस करके डिस्चार्ज, isn't it? So commonly we say in chemistry that the anion loses electron on the anode and discharges, whereas cation gains electron on the cathode and discharges. Is that so? ये स्टोरी इलेक्ट्रोलिसिस की. आयन डिस्चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन ये जो आपका बल्ब ग्लोज एंड वी आर हैप्पी. That's the process of electrolysis we have. Are you getting the point? Now, once you know these facts, let's learn about strong electrolyte, weak electrolyte, and non-electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा? जिसमें बहुत ज्यादा आयंस हो, ठीक है, टू मेनी फ्री आयंस, राइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट, few free ions. Non-electrolyte, no free ions. अब एग्जांपल क्या होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की? तो आई कैन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स, strong bases, and soluble salts.
मैक्सिमम आइंस देंगे. Weak electrolytes, I can say weak acids, weak bases. Non-electrolytes, you can say pure water, organic compounds, etc. लिख लें पहले आपके. So done, everyone. Now, अगर हमें ये भी चेक करना हो कि वाकई स्ट्रांग है, वीक है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बना लेते हैं. ये सेल, बल्ब, electrodes, electrolyte. So basically, if this contains strong electrolyte, तो क्या होगा? This bulb will glow to its brightest. What if I have a weak electrolyte? Weak electrolyte. अब क्या होगा? ये बल्ब की ब्राइटनेस जरा लो हो जाएगी, जरा डिम हो जाएगी. और अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, बल्ब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, Weak electrolyte example, weak acids, weak bases, yes. And the covalent compounds are non-electrolytes. और weak acids के examples ना carboxylic acids हो गए, organic acids, carbonic acids. और weak base क्या होती है? ये मैंने बताया था acids versus salts chapter में. First group hydroxides के अलावा सारी weak bases होती हैं. Even aqueous ammonia is a weak base. Yes, ammeter can also be used to adjust the amount of current, Zainab. तो अब इलेक्ट्रिकल इंडक्शन ही नहीं होनी तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, isn't it? यहाँ पे I want to discuss one very important thing with you. Okay. See please everyone. देखें, अगर तो मेरे पास let's say for example ये बैटरी है. Sir, can you rewind a bit? और let's say Okay. Let me know when can I move on. तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं तो इसमें सारे कार्बोक्सिल वगैरह काउंट होंगे. Yes, I mean all carboxylic acids. अनाल ठीक हो. Sir, you can move on. Thank you. No problem. यहाँ पे I want to discuss one very important thing with you. Okay. See please everyone. देखें, अगर तो मेरे पास let's say for example ये बैटरी है और let's say
मेरे पास NaCl लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है. ऑफ कोर्स दिस बल्ब विल ग्लो, ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा. सो आई थिंक यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन आयोनिक कंपाउंड हो या एक्वस आयोनिक कंपाउंड हो या एक्वस एसिड हो तो इट विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, circuit is complete and the bulb will glow. On the other hand, what if, let's say for example, if I have bulb, what if अगर ये mercury होता, mercury is liquid at RTP, the bulb will still glow. But for God's sake, this is not electrolysis. It is just simple electrical conduction. ये mercury decompose नहीं कर सकता. ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, ये सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है. सिंपल. दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस. दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. सिंपल. इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहे हैं, यहां फ्लो कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं. यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अब आयंस फ्लो कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोलिसिस. और आपको पता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेड से जोड़ दूं, लेड मेटल से जोड़ दूं, तो द बल्ब विल स्टिल ग्लो क्योंकि इट इज सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. लेट्स से अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोड्स वाटर में डिप कर दूं, लेट्स से प्योर वाटर, और यहां पे बल्ब है, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट इज नाइदर कंडक्शन नॉर इट्स इलेक्ट्रोलिसिस. हाँ, अगर ये जो प्योर वाटर में एक दो ड्रॉप एसिड डाल दूं, इस प्योर वाटर में अगर मैं एक दो ड्रॉप एसिड डाल दूं तो एकदम फ्री आयन जनरेट होगी, इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगी एंड द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग. Isn't it? So these things need to be very clear before we start off with electrolysis, the whole chapter and the processes and procedures. I hope that यहाँ पे बातें आपको clear होंगी. Next we'll start off. Are you clear? Moving on further. Will we get a shock in pure water one? Yes, Taha. You guys, shall I move on, everyone? 1 second, sir. Yes, sir. लिख लें. याद रखें कि अगर तो याद रखें इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंपाउंड. ये जो मैंने मर्करी लिक्विड लिखा हुआ है, सिंपल मेटल है क्योंकि मर्करी लिक्विड स्टेट में ही होता है. यहाँ अगर कोई भी मेटल ले लें मोल्टन स्टेट में तो वो सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगी, वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा. इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए देयर हैज टू बी अ कंपाउंड टू बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. देखिए, अगर आपके पास लेड है ना, लेड इज अ मेटल ना, तो आप अगर इस तरह की तारे लगा के मेटल को भी लगा देते हैं और बैटरी और बल्ब लगाए तो बल्ब तो ग्लो करेगा. ये तो सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कहते. तो अगर आपने सिंपल अगर मेटल लिया हुआ है, चाहे सॉलिड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में, वो सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है. इलेक्ट्रोलिसिस ओनली ऑफ अ कंपाउंड. Shall I move on? Yes, sir. There we go. Just give me a moment.
Hello guys, everyone. I hope you all are doing well. So, in the last time we left learning about electrolysis, that what electrolysis is, right? Now, we'll move on since it's a huge chapter, so we always divide this chapter into subtopics. So, we shall be learning firstly electrolysis of molten compounds. Right? Then we'll learn electrolysis of aqueous dilute solution. Third, we will learn electrolysis of aqueous concentrated solution. Fourth, then we learn the industrial application भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले I must make you clear that these electrolysis will be done using inert electrodes. Using inert electrodes. Then we'll also do electrolysis of aqueous copper sulfate using copper electrodes, right? So by the way, the inert electrodes, ये जो inert electrodes हैं, right? Inert electrodes, ये क्या हैं? So they are either graphite or platinum. Okay. Then we'll do industrial application of electrolysis. Now, in this industrial application, we'll be learning purification of copper and electroplating. Electroplating, purification of copper, and extraction of aluminium. जो हम basically molten compounds के electrolysis में ही कर लेंगे. Once we know all these things, then we start learning the electrochemical cell, also called as simple cell. So पढ़ेंगे electrochemical cell, also termed as simple cell. All right. So guys, everyone, let's start off with electrolysis of molten compounds. Say please divine a bit. And now we have सोल्यूशन में यानी कि aqueous salts, acids और bases होंगे ना. Yes. Extraction of iron इसमें नहीं है? Extraction of iron electrolysis नहीं है. It's in metals. Done, sir. Okay. and now we have electrolysis of molten compounds. Please stay focused. Let's say I have NaCl liquid. So this is, let's say, NaCl liquid, battery, the longer line positive, shorter line negative, electrodes made of graphite or platinum, you can say. I hope you know that the positive electrode is the anode, the negative electrode is a cathode. और इसके अंदर there is molten NaCl. अब NaCl मेल्ट हुआ है,
लेकिन आपने यहाँ पे हीटिंग कंटिन्यूड रखनी है, ठीक है। सो यू कैन नॉट स्टॉप हीटिंग, आप हीटिंग नहीं रोक सकते, ठीक है। यू हैव टू कीप NaCl in the molten state. If you stop heating, I must tell you that there will be no electrical conduction, there will be no electrolysis, the process will be stopped forever. That's why heat is continuous. Agreed? Now, solution में क्या क्या पड़ा हुआ है? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्या होगा? सोडियम आयन यहां अट्रैक्ट होगा, क्लोराइड आयन यहां अट्रैक्ट होगा। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस ऑन द कैथोड? सोडियम आयंस ने आना है और आके डिस्चार्ज करना है, राइट। डिस्चार्ज करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। डिस्चार्ज मीन्स चार्ज खत्म करना। तो +1 इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव्स यू सोडियम। माइंड इट, सोडियम की फिजिकल स्टेट विल बी लिक्विड, नॉट सॉलिड, क्योंकि अंदर तो हीट है। अगर NaCl मेल्ट हुआ हुआ है तो सोडियम सॉलिड कैसे बन सकता है? तो ये यहां पे आके ड्रिप करता रहता है, राइट, इट ड्रिप्स। देन एट द एनोड क्लोराइड आयंस डिस्चार्ज। तो क्लोराइड के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Cl एटम बन जाएगा, ये डिस्चार्जिंग हो गई। लेकिन क्लोरीन की फिजिकल स्टेट क्या होती है? आई मीन उसका फॉर्मूला क्या होता है क्लोरीन का? इट्स अ गैस बाय द वे, एंड देन फॉर्मूला इज Cl2, इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो इट मींस क्या एक ही क्लोराइड आयन डिस्चार्ज करे एक वक्त में? मेनी क्लोराइड आयंस डिस्चार्ज। क्या एक ही क्लोरीन एटम बन रहा है? मेनी क्लोरीन एटम्स फॉर्म and they react and form chlorine gas, the 2Cl negative and Cl2, and therefore it goes with 2 electrons, right? Liquid and gas. So therefore sodium is a gray metal. So I think reaction की observations क्या होंगी? तो you can say कि gray liquid, metal नहीं, gray liquid observed at the cathode, right? Effervescence of greenish yellow gas at the anode. And third, since electrolyte discharge हो ही जा रहा है तो electrical level decrease करेगा, so the level of the melt decreases. Level of the melt decreases. So I think ये 3 observations आपको यहाँ पे देखेंगी। लेकिन वो जो third observation है कि level of the melt will decrease, right? And this observation will survive for every electrolysis, isn't it? So guys, are you clear? Yes. Now, let's say if I have अच्छा, एक बात याद रखें, जब आप सिंपल इक्वेशन लिख रहे हो कैथोड नोड की, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना जरूरी नहीं है जब तक हम आपको ये ना कहेंगे रिडॉक्स लिख दें। रिडॉक्स रिएक्शन इसका लिखेंगे, फिर आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना मैंडेटरी है। अगर आप सिंपल कैथोड की इक्वेशन लिख रहे हैं, सिंपल एनोड की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अनलेस दे आस्क यू टू बैलेंस द इक्वेशन एंड राइट अ रिडॉक्स। सही है, लास्ट पॉइंट समझा दें। देखिए, जो लेवल ऑफ द मेल्ट डिक्रीजेस का मतलब ये है कि जब जाहिर सी बात है कि मोल्टन स्टेट में जब आयंस निकलने शुरू हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल डिक्रीज नहीं करेगा, एक वक्त आएगा इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का लेवल डिक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि वो यूज है, वो ही जा रहा है। आई जस्ट यूज सम फैंसी इंग्लिश। लास्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट इज बीइंग यूज्ड अप, electrolyte is being used up. मैंने बस उसको जरा फैंसी इंग्लिश में लिख लिया कि you know like you can level of the melt will decrease. Okay, moving on. Shall I go on, everyone? सर एक मिनट, सही, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ आपने? Level of the melt will decrease. इसका मतलब है electrolyte is being used up. आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा है।
यस सर, अब हम जा सकते हैं. जी आतिका, last point is for every electrolysis बस word melt का चेंज कर दीजिएगा क्योंकि melt means कि molten liquid है. Okay? Yes बेटा, आप चाहे ये लिख लें कि 2Cl negative minus 2 electron gives Cl2. यहाँ पे आपको 2Cl2 sorry 2Cl negative it gives Cl2 plus 2 electrons. Either is right. और आप हीट करते रहेंगे constantly. हीट रोकेंगे तो रिएक्शन रुक जाएगा. So guys, very clear? Yes? Now, let's say if I have magnesium oxide. Now when I say if I have magnesium oxide liquid, molten, right? So of course, oh sorry. Battery. MgO liquid, electrolyte. Positive, negative. एनोड, कैथोड और इसके अंदर मैग्नीशियम आयंस एंड ऑक्साइड आयंस. हमें पता है कि ऑक्साइड आयंस एनोड पे जाएंगे, एन आयंस और ये जो कैटायंस हैं कैथोड पे आ जाएंगे. राइट नाउ व्हाट हैपेंस एट द कैथोड? मैग्नीशियम आयंस discharge and form magnesium liquid. On the anode, oxide ions discharge like this. एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो एटम बन गया. अब इलेक्ट्रॉन लॉस हम यूजुअली इधर शो नहीं करते, राइट? यहाँ शो नहीं करते, हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं. अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज ही हुआ ऑक्साइड. लेकिन जो कि ऑक्सीजन गैस O2 होती है, सो देयरफॉर 2 ऑक्साइड आयंस will give you O2 and this will be 4 electrons. Talk about the heating is continued. Again, gray liquid observed at the cathode and the bubbles of colorless gas at the anode, and the level of melt decreases. Okay everyone, let's move on. एक आप कर दें and then we move ahead. Okay, it's calcium fluoride. Excuse me, sir. Liquid. बचा. Please rewind कर दें, मैं equation लिख रहा So magnesium ion reduce हो रहा है और oxide ion is getting oxidized. Very clear, guys. चलिए, what we'll do is that के ये मैं lecture आपसे भी share करने लगा हूँ, ठीक है? I'm sharing this lecture with you. 15 minutes रह गए हैं. So since you have next class somewhere, once you're done with it, लेकिन please make sure that you actually complete the 15 minutes of this lecture. So I'm sharing this lecture with you. यहीं से कुछ और नहीं दिखाता है तक आप इसको complete कर लें. Okay? तो आप जब कल आए तो we start from here. Okay? So thank you very much. Take care. Keep smiling and Khuda Hafiz. Sir?